start with $400 and you can earn up to $4,000 as a captain. Indian Navy में there are lot of I would say गलत institutes हैं जो कि training करवाते हैं. Sometimes they don't even get the certificate. So normally 2-3 ships आपको दिए जाते हैं. So आपको 18 months ship को पूरे करने हैं. So they will send you on ship probably in 2 or 3 ships you will complete your sea time. 5 साल के अंदर आप first officer level पे आने के लिए ready हो. But now is the time when you need to go for examination. One more set of examinations. तो अगर suppose आज कश्यप is a good friend of mine, okay, मेरे स्कूल का दोस्त है. वो अगर 6 महीने मेरे को नहीं भी कॉल कर पाएगा, considering he's busy in his Mumbai job, I will still be his friend, okay. But now coming to your girlfriend part, our company is actually putting Starlink. Oh, okay. Starlink and अभी ये हालत है कि lot of people recently जो वर्ल्ड कप हुआ था शिप पे उन्होंने प्रोजेक्टर पे लगा के देखा था. जब मैं शिप पे था 6 months चाहे मैं कंटिन्यूअसली दूर था, but when I'm at home, so I can decide whether I want to be staying here for 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. Yes, I always love being in merchant navy. Hi guys, welcome to part 2 of the podcast with Captain Pratik Ghai. और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो विल लिंक इट समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन या अबव समवेयर, तो यू कैन गो वॉच इट. एंड इन दैट वी डिस्कस्ड विद हिम कि मर्चेंट नेवी क्या है, इफ यू आर एन इंडियन हाउ डू यू गेट इनटू द मर्चेंट नेवी, व्हाट आर द पर्क्स ऑफ द जॉब, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द जॉब, डे टू डे क्या क्या रहता है करने को. देन दिस पॉडकास्ट विल बी स्टार्टिंग विद कि क्या डेंजर्स रहते हैं जॉब के, क्योंकि यू आर आउट एट सी फॉर 4, 5, 6 months. देन वी ऑल्सो टॉक टू हिम अबाउट कि हाउ डू यू मेंटेन रिलेशनशिप्स विथ योर family, friends, etc. क्योंकि you're out traveling and they're obviously at their homes in whatever country they're in. Now, Pratik sir very graciously offered कि अगर किसी को भी कोई doubt है regarding the process, if they're trying to get into the merchant navy या they want to know more, he very graciously offered कि you can put your doubts in the comments below, and if he's able to help you, he'll help you, and maybe we can also put you directly in touch with him if you need it. Now, if you have any feedback for us other than that, please let us know in the comments again, and do enjoy the podcast. In terms of the day to day, so I think you gave a clear idea कि ये होता है, but like any specific story or instance you have from your work days, a bad situation that you had to handle, because I think at least for me, for example, मेरे को तो डर लगता है ocean से, sea से, मैं तो शायद जा ही नहीं पाऊँ. I'll tell you, ships are very safe. Okay. Now I'm coming to your question. कि हाँ. एक दिन टिपिकल एक डे कैसा रहेगा. ऑफ कोर्स हर रैंक पे बहुत अलग रहता है, बट एक जनरल आइडिया देने की कोशिश करूंगा. जब आपने एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं और आप कैडेट हो शिप पे, तो ऑफ कोर्स डेक साइड का अलग है. इंजन में यू आर मेंटेनिंग वेरियस मशीनरीज. सो सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो मशीनरीज ओवरऑल करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं. सो यू आर वर्किंग विद देम एंड लर्निंग अबाउट द मशीनरी, फॉल्ट फाइंडिंग एक्सेट्रा. सिमिलरली ऑन डेक, तो डेक पे हमारा सबसे ज़्यादा जो लेबर इंटेंसिव काम है वो जो रस्ट है, शिप पे रस्ट आता है, उसको हटा के उस पर पेंट करना. 2-3 कोट, 2 प्राइमर की कोट, 3 प्राइमर के कोट एंड फिनिश कोट, टू कीप द शिप सेफ एंड लुकिंग गुड. बिकॉज अगर आप शिप सड़ने लग जाएगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में. एंड कंपनीज इतना महंगा शिप लेते हैं तो कम से कम 30-35 ईयर्स उसको चलाते हैं, मेंटेन करते हैं. तो मेजर जो काम वही होता है. तो हम शुरू में कैडेट्स को भी इस काम में डालते हैं ताकि उनको भी ये सब काम आए. किसी काम में नहीं, वायर्स चेंज होती है, लॉट ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेज, लॉट ऑफ क्रेन्स आर इन्वॉल्वड ऑन शिप. क्रेन्स की वायर की ड्यूरेशन है, उनकी वायर की ग्रीसिंग है, मशीनरी की ग्रीसिंग है, लुब्रिकेशन है, चिपिंग है, पेंटिंग है मशीनरीज का. उसके बाद कैडेट को मॉर्निंग में चीफ ऑफिसर की वॉच होती है. चीफ ऑफिसर इज फर्स्ट ऑफिसर बाय द वे. सो फर्स्ट ऑफिसर के साथ तो सुबह उसको 4 to 8 वॉच करना पड़ेगा. वो नेविगेशन ब्रिज पे रहेगा जहाँ वो सीखेगा चीफ ऑफिसर के अंदर कि कैसे नेविगेशन करते हैं. अगर कोई दिखा, कोई फिशिंग वेसल दिखा तो शिप का कैसे मैनोवरिंग करना है, कैसे एक्शन लेना है. ओके, बिकॉज आपकी कार की तरह ब्रेक नहीं है, सडनली ब्रेक लगा दी. यू नीड टू चेक द रेडार्स एंड डू थिंग्स वेल इन एडवांस. तो वो 4 से 8 वो करेगा, उसके बाद नीचे आके नाश्ता करेगा, एंड देन ही विल गो फॉर द वर्क विद द रेटिंग्स. क्योंकि आज करेगा वो काम, तभी टुमारो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू बी डन. तो उसको टॉयलेट भी साफ करने पड़ेंगे अगर किसी को उस चीज़ से घबराहट हो. ठीक है, उसको झाड़ू पोछे भी लगाने पड़ेंगे शिप के ऊपर, और उसको पढ़ाई भी करनी होगी. उसको ये डेक पे चिपिंग, पेंटिंग, लुब्रिकेशन, ये सब भी करना पड़ेगा. और इस तरह से नॉर्मली वो लंच, सो देयर विल बी 2 टी ब्रेक्स, मॉर्निंग 10-10:30, देन इवनिंग में 3 o'clock के आसपास 12 से 1 बजे लंच रहेगा. सो फूड एक्सेट्रा एवरीथिंग इज कंपनी पेड ऑन शिप.
टिफिन को बना के रखेगा। वी विल हैव मेस रूम्स वेयर पीपल ईट, यू कांट ईट इन द कैबिन्स। तो आप वहाँ पे मेस रूम में खाना खाएँगे, थोड़ा आराम करेंगे, 1 बजे फिर काम स्टार्ट करेंगे। एंड शाम को आपको दोबारा 4 टू 8 चीफ ऑफिसर की वॉच है, तो आपको थोड़ा-सा जल्दी छुट्टी मिलेगी। आप शाम को दोबारा ब्रिज पे जाओगे, नेविगेशन ब्रिज पे आप सीखोगे वहाँ पे काम चीफ ऑफिसर के साथ, लॉग बुक्स कैसे भरनी है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है। एंड 8 बजे आपकी फिर छुट्टी, सुबह 4 बजे आपको फिर आना है। ये कैडेट का रूटीन है। Wow. व्हेयरएज़ जो ऑफिसर्स हैं, उनकी फिक्स टाइमिंग्स हैं 8 टू 12 टाइटैनिक की एजेस से अगर आप देखोगे, तो 8 Mm. टू 12 थर्ड ऑफिसर की वॉच रहती है हमेशा मॉर्निंग एंड इवनिंग, 12 टू 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 12 टू 1600 इन द इवनिंग सेकंड ऑफिसर की वॉच रहती है, जब टाइटैनिक आपका 2 बजे डूबा था रात को 2:20 पे। तो Okay. वो तो वो सेकंड सेकंड ऑफिसर ऑफिसर के अंडर। सेकंड ऑफिसर का एंड फर्स्ट ऑफिसर का 4 टू 8 मॉर्निंग 4 टू 8 इवनिंग इस तरह से 24 आवर्स हर जगह डिवाइड होते हैं जहाँ 3 ऑफिसर्स हैं। कैप्टन इज द ओवरऑल इंचार्ज, ही डोंट डू द नेविगेशन वॉच, बट आपको कभी भी जरूरत है, कभी भी आपको लग रहा है कि आप हैंडल नहीं कर रहे सिचुएशन, कैप्टन विल ऑलवेज कम फॉर द सिचुएशन। एंड ये 8 घंटा करने के अलावा हर ऑफिसर को कुछ और ड्यूटीज दी जाती हैं जो उसको करनी है। लाइक जो थर्ड ऑफिसर है, वो सारे फायर फाइटिंग अप्लायंसेस और लाइफ सेविंग अप्लायंसेस उसका मेंटेनेंस इंस्पेक्शन देखेगा, पोर्ट पेपर्स देखेगा, शिप पे जो स्टोर्स वगैरह हमारा एक बॉन्ड स्टोर रहता है जहाँ पे कुछ सामान हम लोग खरीद के मंगवाते हैं, उसको इश्यू करते हैं, वो सब देखेगा और सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करेगा एज़ रिक्वायर्ड एट टाइम्स। सिमिलरली सेकंड ऑफिसर जो है, वो भी 8 घंटा नेविगेशन वॉच करेगा। उसको ब्रिज के सारे नेविगेशन इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस एंड वर्किंग की ड्यूटी, पैसेज जो प्लान करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सारी जो पब्लिकेशंस हैं शिप पे, उसमें कोई नई पब्लिकेशन आई, कोई किसी को डिस्कार्ड करना है, ये सब ड्यूटीज़ उसकी रहेंगी। फर्स्ट ऑफिसर की आई टोल्ड यू स्टेबिलिटी की ड्यूटी, कैडेट की ट्रेनिंग की ड्यूटी, सिक्योरिटी शिप की, सेफ्टी ऑफिसर भी रहता है वो शिप का। सो मल्टीपल जॉब्स हैं फर्स्ट ऑफिसर की। एंड कैप्टन का काम ये है कि इंजन रूम एंड डेक, फर्स्ट ऑफिसर एंड फर्स्ट इंजीनियर, वो लोग अपना जो काम है एज पर द कंपनी मैनुअल्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखें, इंस्पेक्ट करें और टाइम टू टाइम जिसको भी जहाँ सपोर्ट चाहिए दें। ही इज बेसिकली लाइजनिंग विद द कंपनी एज वेल एज द शिप कीपर। Clear, sir. Yeah. I think we are clear with the exams and the work also. Sir, एक question I think it came up because I realized कि आप 6 months on the ये रहते हो away from people, आपके relatives, आपके दोस्त, जैसे आपने कहा अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो you're away from them so long, तो क्या ये मतलब mentally how does someone handle it? क्या relationships टूट जाते हैं या like how do you think about this part of the job? I think if you are maintaining good relations and if you have a good dialogue with people, तो अगर सपोज आज कश्यप इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ओके, Hmm. मेरे स्कूल का दोस्त है, वो अगर 6 महीना मेरे को नहीं भी कॉल कर पाएगा, कंसिडरिंग ही इज बिजी इन हिज मुंबई जॉब, आई विल स्टिल बी हिज फ्रेंड, ओके। बट नाउ कमिंग टू योर गर्लफ्रेंड पार्ट, अगर कोई गर्लफ्रेंड अच्छी है जो आपको लाइफ पार्टनर की तरह देख रही है, एंड फीमेल्स भी जाती हैं आजकल, तो बॉयफ्रेंड की भी बात कर सकते हैं। तो आपका कोई भी लाइफ पार्टनर है, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, अगर वो आपको समझते हैं अच्छे से एंड इफ दे नो दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड यू आर डूइंग इट फॉर अ कॉज ऑफ कोर्स, तो करियर परस्यू करना कभी भी गलत नहीं है। तो आई थिंक येस, डिफिकल्टीज कैन बी देयर, बट पुराने ज़माने से बहुत अच्छा है। आई जॉइन्ड इन 2002, दैट टाइम सैटेलाइट कॉल होता था, वो भी ऑफ पीक आवर्स जैसे हमारे एसटीडी फोन्स होते थे। तो Hmm. यूके के जीएमटी टाइम के हिसाब से जो ऑफ पीक आवर है उसमें पर मिनट का $2 था। Wow. Okay. एंड उसके बाद फिर पोर्ट में जब हम जाते थे तो फ़ोन कार्ड्स वगैरह मिलते थे। तो $2 नहीं, $10 में 20 मिनट्स मिलते थे। फिर धीरे-धीरे $10 में 3 आवर 4 आवर हो गया। उसके बाद शिप के ऊपर ह छोटा-छोटा इंटरनेट आ गया। अभी आवर कंपनी इज़ एक्चुअली पुटिंग स्टारलिंक, Oh. Okay. ओके, स्टारलिंक। एंड अभी ये हालत है कि लॉट ऑफ पीपल रिसेंटली जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था, शिप पे उन्होंने प्रोजेक्टर पे लगा के देखा था। Oh, amazing. तो अभी पीपल हैव गॉट 1 जीबी पर डे। आई हैव व्हेन आई वाज़ सेलिंग आई वाज़ गेटिंग 400 600 एमबी फॉर अ मंथ, and for that also I was we all were very obliged to the company because it's a big thing। तो अब लोग सब Right. चीजें डिलीट कर देते थे because background में lot of things eat up your data। 400 600 एमबी में we just use WhatsApp। फिर कोविड के दौरान हमारी कंपनी ने 1 जीबी का 2 जीबी कर दिया, तो थोड़ा बहुत वीडियो कॉल भी कर पाते थे हम लोग, क्योंकि हम लैंड पे उतरना सब जगह मना था दुनिया में।
सो अब विद दिस स्टारलिंक आई गेस एक कंपनी में आया, दूसरी कंपनी में, धीरे-धीरे सब जगह, सो थिंग्स आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, फिजिकली आप नहीं मिल पाओगे 5-6 महीना, लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कश्यप एंड अमित आपको मैं बहुत अच्छे से जान पा रहा हूँ, एक अच्छा हाँ, कम्युनिकेशन है। तो आई थिंक आज के ज़माने में वो चीज़ थोड़ी-सी ईज़ी है। अंडरस्टूड। या हाँ, Alright. बट अदर पार्ट इज़ Abhi now I'm into teaching job for the viewers. So basically, I started my career in 2002 and went till captain, and then I switched over to a show job. So basically, I'm a maritime trainer now in my own company. So जो अब शिप पे लोग जाते हैं, उनको वैल्यू एडेड या मैंडेटरी कोर्सेज और ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। सो अभी आई एम ऑन अ 9 to 5 जॉब, जस्ट लाइक एनी ऑफ यू गाइज। मॉर्निंग में जाना है एंड बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना है, उस हिसाब से वापस आओ, मॉर्निंग का ट्रैफिक झेलो, इवनिंग का ट्रैफिक झेलो, फिर सैटरडे संडे मिलता है तो उसमें घर के काम है। अब फैमिली को मैं उतना टाइम नहीं दे पाता। वेयरएज़ जब मैं शिप पे था, 6 मंथ्स चाहे मैं कंटीन्यूअसली दूर था, बट व्हेन आई एम एट होम, सो आई कैन डिसाइड वेदर आई वांट टू बी स्टेइंग हियर फॉर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथस। यस, कंपनी का 3 महीने में कॉल आ जाएगा, बोलेगा अरे इतना लेट वगैरह। बट अगर आपको कुछ सपोज़ घर में मैरिज है, कुछ आपको कुछ और परस्यू करना है, या आपको लैटिन अमेरिका घूमने जाना है 1 एंड अ हाफ मंथ, 2 महीने के लिए निकल जाना है, सो यू हैव द मनी, यू हैव द टाइम विद यू। No other profession has got these two things at the same time so easily. They can find, not so easily. So या yes, pros हैं तो cons भी हैं, cons हैं तो pros भी हैं। ब्रेक ही नहीं लेने मिलता है सर बाकी करियर्स में, तो लाइक यू कांट टेक अ 2-3 मंथ का ब्रेक एट ऑल। नहीं ले सकते, आपको जब तक जॉब नहीं छोड़ोगे। हाँ, I went for a US trip for 1 month. अब 1 मंथ का ब्रेक लेना हो, पैसा बहुतों के पास है। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग बिजनेसेस इन इंडिया, पीपल आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी। ओके, नाउ इंडिया इज वेरी डिफरेंट, वी आर प्रोग्रेसिंग, बट उतने पैसे के साथ क्या आपको उतना टाइम भी मिलेगा? क्या आप बैकपैक करके कश्यप और आप दोनों जाके लैटिन अमेरिका का पूरा 2 महीने का ट्रिप कर सकते हो बैकपैकिंग? नहीं कर पाओगे। पैसा होने के बावजूद भी नहीं कर पाओगे, अगर अनटिल अनलेस यू आर नॉट डूइंग अ जॉब। ओके, सो यस, उसका इश्यू है, 6 महीना आप घर से दूर होते हो, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज डूइंग, वी हैव डन इट, इट्स टफ बट कैन बी डन। Yeah, so I think this explains a lot of things from the whole career perspective of how to get into merchant navy and everything. Now, like maybe the fun part of it, like you might have visited a lot of countries, and Mhm. uh, and like did you always look forward to this traveler lifestyle while you are on work as well? Like you touched upon this bit just now, like you did backpacking trips across the times, but also when you say you are going from India to some other country and then you are at the port, so you could explore that country as well. So did you look forward to this part of your job as well a lot? Okay, so see, first of all, times are changing. Hmm. Abhi, the ship's turnaround time in a port is very less. Okay, Okay. so I will tell the viewers कि don't be under a false impression कि अगर आप किसी भी country में जाते हो, तो उस country में आपको घूमने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। First thing is it depends whether that country is allowing or not. Okay, I mean considering the situations like अफ्रीका वगैरह के कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कैप्टन ही आपको मना कर देगा, he will not let you go out because of the safety reasons. Okay, it's his responsibility to keep everyone safe on ship. कभी-कभी कंपनी के, कभी-कभी कंट्री के इमिग्रेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में इमिग्रेशन आके आपको पास बनाएगा, तभी आप जा सकते हो बाहर, अदरवाइज आप नहीं जा पाओगे शिप से बाहर। यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू योर शिप। नाउ अभी शिप पे अगर आपका सपोज करो एक ही दिन के लिए शिप रुक रहा है, जैसे कंटेनर शिप्स हैं, 12 से 18 घंटे मैक्सिमम वन डे में वो लोग एक पोर्ट को छोड़ देते हैं। अब आप पोर्ट में आए हो, उसमें आपका पोर्ट में भी आपकी वॉचेज़ हैं, टाइम है, आपको जो काम करना है। उसके अलावा क्या टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा जिसमें आप घूमने जा सको। और आप शिप्स भी अभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं शिप के सिटीज़ के बाहर होते हैं। सो कंटेनर्स फिर भी शिप के सिटी के थोड़ा नज़दीक आते हैं, बट ऑल दीज़ बल्क कार्गो वेसल्स, ऑयल टैंकर्स, दे गो वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी। सो टैक्सी लेके पहले 1 घंटा जाना, आना। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जेबल अली करके हम लोग दुबई के पास एक पोर्ट है बहुत बड़ा, वहाँ हम गए थे। बट दोज़ डेज़ वी हैड टाइम, इट वाज़ गैस कैरियर, तो हम लोग ने टैक्सी किया, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, एंड हम लोग वहाँ 4 घंटे एक मॉल में घूमे, एंड दैट्स द ओनली दुबई एक्सपीरियंस आई हैव। Oh. ओके, सो कभी-कभी हम यूएस में जाते हैं,
तो एक वॉलमार्ट वहाँ पे है, गए वॉलमार्ट, अपने लिए कुछ चिप्स खरीदे, कुछ शॉपिंग किया, थोड़ा घूम लिया एंड वापस आ गए। हमने कहा अमेरिका घूम लिया, क्योंकि शिप का टाइम हो रहा है ना, आपकी जॉब का Correct. टाइम है, तो यू हैव टू गो बैक on ship for your next duty. Right. But sometime you are lucky also. Like I have been, so it depends upon inmates. अगर जो आपका fellow officer है, if the captain is allowing or your first engineer is allowing you, and people can adjust watches एक आध घंटा ऊपर नीचे, तो इंसान 6-8 घंटे के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। तो कभी कभी आप सिटी के बहुत नज़दीक हो, तो वी हैव बीन टू पोर्ट्स लाइक ब्राजील, कनाडा, एक मॉन्ट फैल्कोने करके एक पोर्ट है, वहां से हम लोग वेनिस घूमने गए थे। यस, थोड़ा भागम भाग वाला ट्रिप था, बट वी वर एबल टू गो टू वेनिस। तो डेफिनेटली जो आप एक पीसफुल माइंड से आप वैसे घूमते हो उस तरह का तो नहीं रहेगा, बट एट टाइम्स आपको चांस मिलेगा। आई हैव बीन टू पिरामिड्स, इजिप्ट, वहां घूमने का चांस मिला। जापान में छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, सो आई हैव कवर्ड जापान, कोरिया, लॉट ऑफ पोर्ट्स इन चाइना। देन इंडिया में आई हैव नॉट came across any port, personally from my vessel. मतलब मेरा चांस नहीं लगा कि इंडिया शिप आए, हमारा आते हैं बहुत सारे, वियतनाम वगैरह, इंडोनेशिया, सिंगापुर में एक आध बार साइन ऑन साइन ऑफ के लिए थोड़ा घूमने को मिला। यूरोप के काफ़ी पोर्ट्स घूमे हैं, नॉर्वे, बाल्टिक सी में। सो सम सी इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गोइंग इनटू अ पोर्ट, इट्स आल्सो अबाउट लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर एरिया कि वो कैसा है। आप वॉलमार्ट गए, लेकिन आप उस रोड से ट्रेवल किया। हम लोग जेबल से दुबई की सिटी तक गए, तो हम लोगों ने हाईवे देखा, वहाँ बिल्डिंग्स कैसी हैं, वहाँ का लोगों का रहना कैसा है, वहाँ पे इरिगेशन जो प्लांट्स हैं उनका कैसा हो रहा है वर्सेस Correct. नॉर्वे में क्या है, वहाँ की तो उतना देखना भी मुझे लगता है एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप अलग से शायद इतना नहीं घूम पाओगे। ये गारंटी है, हर जगह आप बहुत मस्त घूमोगे ऐसा नहीं है, बट यस यू विल टच अपॉन एरियाज, यू विल गेट सम एक्सपीरियंसेस, एंड सम टाइम इफ यू आर लकी यू कैन गेट सम वेरी गुड एक्सपीरियंसेस एज वेल। सर जस्ट विद दिस एक्सपीरियंस वाला पार्ट, जैसे बाकी करियर्स में एक मतलब सेट पाथ होता है, एंड फॉर एग्जांपल एज एन इंजीनियर में भी अ गुड एक्सपीरियंस इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और वो सक्सीड हो गया। मर्चेंट नेवी में व्हाट वाज लाइक अ पीक एक्सपीरियंस फॉर यू, जहाँ पे यू फेल्ट यार मजा आ गया आज तो, लाइक आई In लव terms of दिस जॉब, work experience in or in no no in terms of one day you felt कि I just love this job man types. I always love being in merchant navy. Okay, okay. I always tell people it is tough, and I think हाँ, कौन सा करियर टफ नहीं है अपने में, अगर आप रियली में उसको जस्टिफाई करना चाहते हो अपने काम को, तो यस इट्स अ टफ जॉब, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉब, वेरी डायनेमिक। आपका चलता फिरता ऑफिस है। आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो आप उन्हीं स्टूडेंट्स को वही सब्जेक्ट हर बार पढ़ा रहे हो, एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। आप कितना भी क्रिएटिविटी लेके आओ, बट यहाँ पे आपको यही समंदर कभी चौपी है, कभी एकदम ऑयल और ग्लास की तरह एकदम प्लेन हो जाएगा। यू विल बी अमेज्ड कि यार ऐसा कैसे? हाँ. यही इतना खतरनाक हो जाता है और यही एकदम कांच की तरह हो जाता है। And यू it must गेट be लॉट beautiful also, right? ऐसे because जैसे Life of Pi movie में वगैरह we saw the ocean look so beautiful. यस, तो एट टाइम्स यू गेट yeah, दैट एज़ वेल। okay. बायोलुमिनेसेंस है, एक नेचुरल फिनोमेना है। Hmm. यू कैन सर्च ऑन गूगल, वो आपका लाइट चमकती है शिप के साइड और पानी में। The blue बायोलुम light phenomenon, right? फ्लाइंग फिशेस आपको दिखती Hmm. हैं, मैं अपने वाइफ और Hmm. डॉटर के साथ सेल किया हुआ है। सो ऑफिसर्स कैन टेक देयर फैमिली एज़ वेल इफ द कंपनी एंड द सिचुएशन अलाउज़। तो Okay. फ्लाइंग फिशेस, डॉल्फिन्स, ट्यूना, व्हेल, व्हेल्स, आइसबर्ग्स, एंड आपने मुंबई को अंदर से देखा है? क्या जब शिप बाहर से आता है तो हाउ द मुंबई लुक्स, Okay. क्या कभी आप वो देख सकते हो? कि आप एक बहुत कम एज ग्रुप में एक अच्छे लेवल पे पैसा कमाते हो, रैंक्स कमाते हो, एंड यू गेट टू हैव सो मच ऑफ एक्सपोज़र, टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, मीटिंग विद डिफरेंट पीपल, जॉब चेंज हो रहा है, एंड इट्स अ जॉब व्हिच हैज़ गॉट अ मिक्स ऑफ यूनिफॉर्म एज़ वेल एज़ द कॉर्पोरेट का मज़ा। So for a company, at the same time, you have a uniform. You get one stripe as a third officer, two stripes second officer, first officer with three stripes, and finally as a captain you get four stripes. Similarly, in the engine room, till chief engineer, you get four stripes. So you get uniform fun. At the same time, you are working in a private company with a private setup, rules and regulations. तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आपका जॉब चेंज हो रहा है, कभी बहुत अच्छा वेदर है, कभी बहुत खराब है। कभी आप इस मशीनरी पे काम कर रहे हो, कभी आप झाड़ू-पोछा लगा रहे हो। Hmm. कभी आप ऑयल टैंकर पे जा सकते हो, आप बल्क कैरियर पे जा सकते हो, कंटेनर पे जा सकते हो,
कार कैरियर्स पे जा सकते हो. सो डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स विल गिव यू डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ योर जॉब. एक पर्टिकुलर शिप पे आपका काम बदलता रहता है, आपके सीनरीज बदलती रहती हैं. अभी ये मैं सीनरी डाल के बैठा हूँ, तो आई फील लाइक आई एम सिटिंग इन कनाडा इन प्रॉब्ली विंटर्स. ओके, बट सिमिलरली शिप पे आपको चारों तरफ चीजें चेंज हो रही हैं. समटाइम एंड यू गेट लॉट ऑफ स्टार्स कॉन्स्टलेशंस टू सी, जो कि आजकल बड़ी सिटीज में पॉसिबल नहीं है देखना. बट ये तारीफों के अलावा ये भी है कि आप घर से दूर हो. 6 महीना आप कोई घर में बीमार हो गया, तो अगर सीरियस है तो यस आना मुश्किल हो जाता है. बट हाँ, छोटा मोटा कोई बीमार है तो किसी और को टेक केयर करना पड़ेगा. कोई, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स की शादियां मिस की हैं, अपने कजन्स की मैरिजेस मिस की हैं, बिकॉज फॉर अ मैरिज आई कांट कम बैक होम. ओके, Right. सो ये इसके नेगेटिव पार्ट भी हैं. बट आई थिंक अगर आपका करियर अच्छा है, आप पैसा कमा रहे हो ईमानदारी से, रिस्पेक्ट कमा रहे हो, अपनी फैमिली को आप उठा रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं उसके सामने. Uh, Thanks a lot, sir, for all of these insights that you gave us on the whole career, the experience, and I think now I have a very clearer picture of how and what a merchant navy does. How do I get in? Like it has been quite helpful to know all of this, and that too in such a detail. Like if say I was an aspirant, I could basically now chalk out my plan. Like I want to do this, and this is my Yeah. progression. So thanks a lot for uh, answering all of our questions with so much patience and in so much detail. Yeah. We Thanks have a a lot. small bit to our podcast. We at the end of it we ask a few rapid fire questions. It could be a single line answer, word answer, or you may expand on it as well. So maybe I can go with the first question of it. Yeah. So what was the best part of your role as a merchant navy? I would say a uniform job which is giving me good salary. And one thing you would like to change about being in the merchant navy? If I can see my family more often, or shorter contracts probably. Got Understood. it. Like, as AI is a very fascinating topic in today's world, so can this AI or technology take up these jobs or aid you in certain way? Like, It's what is your already take on it? happening now. If you Google, you will come to know there are autonomous ships being built. Small one, of course, in Far East, Japan side, there have been one or two trials also. Completely autonomous ships controlled from the ship. So yes, in near future, probably another, I don't know how many years, this thing can always happen. At least not with your generation. Hmm. But yes, Okay. it can come anytime. But it will take a long time. It is very much possible. It's happening. Sir, and like, what is one missed opportunity in your career that you wish you had a second chance at? Or is there anything like that? Mm, uh, I never think that way. I think whatever I've been. God is very kind. The way things came up in my life, so everything was in place at the right time, right way, and I've also tried my bit not to disrespect whatever is happening in my life. Got it. And like, what's an alternate career you would have chosen if not gone into merchant navy? Mm, landscape designer, basically. Okay. I Got it. love greenery, designing, Sir, do these you kinds of paint things. even now, like in your free time? I paint, I sketch, I make sculptures. I also do tattoo making. I've Oh, made tattoos to people. wow. And I mean, anything with regard to art, I love it. Hmm. So I tried hands on different, like furniture making also. I'm doing, now I started during my shipping career. Now, last 2 years, it's pending, but I Hmm. will do it someday. So anything Uh, related to art, I love doing it. That's Understood. nice. I think we missed upon touching one part in the podcast. Uh, like you mentioned, currently you are teaching in an institute as a maritime trainer. Yeah. How did you make that transition, and what was your thinking behind that to switch from on sea duty to a offshore kind of role? Okay, so good you ask this question. So basically, for new generation, if a lot of people want to become captain or first engineer, chief engineer, uh, they always have an option to continue sailing till they retire. Hmm. Okay, and depending upon your health, you get to stay and 60 plus also at times, because it's up to the company. 65 also, a lot of people I've seen sailing on the ship. So you can earn that much amount of money, but a lot of people want to switch over. Reason being to be with their family.
Nowadays, a lot of young generation is doing it. So there are a lot of options for the engineers as well as the deck officers. Like the deck and engine officers, they can become trainers first of all. That's one section. They can switch over to training. Deck captain can become operations head or operations superintendent. Those who take care of the ship's operation from the shore side. Similarly, there are vessel managers. Normally they are chief engineers, so they can be handling the vessels from the shore side. Hmm. Similarly, you also have auditors, Yeah. those who go on ship in any port and they do the auditing and ensure whatever is happening as per the checklist, as per the company procedure is happening or not. Like you have audits in your company, right? So there are external audits and internal audits. So if they are working for the company itself, they can do the internal audit of the ship. If they join some third party, or they will do the external audits. So they can become auditor, trainer, vessels manager, operations manager, and they can also sit in the quality department of the shore side, be it deck or engine. You have to be basically the captain or the first engineer. You need to reach till that part. There are also jobs as a port captain. The people in the port who ensure the loading and discharging of the cargo, be it oil or the bulk, is happening in a proper manner. So those kind of jobs are also there. And some people switch over to other jobs in the manage. Sorry, I forgot to mention the manning. Hmm. There are a lot of companies in Mumbai who send people on board the vessels. So all these shipping industry, maritime related industry, the top jobs are given majorly to the captains and Hmm. first engineers. Okay. Understood. So the moment you have at least 12 months experience as a captain or chief engineer, you can always switch over. It's up to your choice and the company's will to take you. Wow, so like this career progression, now looking from outside, before this podcast, I did not know that, this was such a good, rich career to have. You get experience, on board, and then now you can do other things also. And probably you can do more things, even probably after instructor also, आपके पास और options Yeah, हैं yeah, of course, of over course. time. Yes, yes. So this If is I want to very, switch over, see, brilliant part is you need to keep your license alive. Okay, okay. so now every 5 years you need to renew your license, Hmm. whatever rank. So now the training teaching time also counts. Hmm. So God forbid if my family needs more money, okay, of course I don't get the way I used to get as a captain. So I can always go back on ship and support my family needs. Wow. Okay, even after 10 years, 15 years, I can switch over to some other short side job. If I don't want to be in training, I can go into auditing, I can go into operations. Of course I need to learn again everything, like how I have learned to be a trainer. Because not navigating a vessel, running a vessel as a captain, and teaching people is two different things. Yeah. That experience, of course, is utilized. So yes, I need to work little more. I need to again start in that particular department, little bit, at a lower rank. But I can always choose, and I can always go back on ship as well. Yeah. Got it. Thanks, sir. I think broadly we are done with the questions. Kashyap, if you don't have any, uh, sir, this has been really really helpful. First of all, I think whenever we meet people from these careers such as the merchant navy, army, you guys come with some a sort of personality and character, and it feels really good talking to you, because that character, I think, for some reason isn't built in other careers. It's very hard to see people have carry themselves this way. So this inspires us, and hopefully anybody who's in 11th or 12th feeling कि यार मेरा मैं आज तक शायद उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाया मेरा पीसीएम में, I have not performed as great as someone who's the topper, but who's still hustly and hardworking and wants to build a career for themselves. I think this will serve as a great podcast for them. Thank you for watching the podcast till the end. If you have any questions or doubts for the guest, please let us know in the comments. एंड इफ यू थिंक कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डू लेट अस नो, ताकि वी कैन फोकस मोर ऑन द एस्पेक्ट नेक्स्ट टाइम. और आप लोग थैंक यू मत कहिए, इंस्टेंट 3 लोगों से शेयर करिए और उन तीनों से कहना कि और 3 लोगों से शेयर करें. दुनिया बदल जाएगी.